Okay, fine. So this is one thing. If somebody is not from this background and if she or he joined this session late, so you can do one thing, na? Either you can start missing parts by your own, or you can watch the videos. Videos are already available. So it's my humble request or suggestion to watch the videos if you are not from the very beginning. Otherwise, you will survive every time. Try to survive. ये इसका एग्जांपल था ना. Yes. The third thing about these operators are we can write a equal to a plus b, something like that. Okay. Means I want to add a and b and I want to store result back to the a or b, whatever. A equal to a minus b. So we can write this thing a plus equal to b. I just want to do reverse. That's mean a equal to a plus b. Yeah. Minus, multiply, divide, modulus. Yeah, things are same, the different way of writing the code. Okay, so if you see something like that, that's mean this is, and we cannot do for only plus but for all these kind of operators. This is the C part and this is the last part of the arithmetic operators. Okay, let's move to the relational operator. Relational operator, that's mean we are going to establish relation between two things. We want to check whether the first thing is smaller or greater or something like that. So the operator is greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. This comes into the category, which category? Relational operator. Getting? Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. Yes or no? Yes. B. Operands. They will only apply on the numeric values. Not numeric, but just a minute. Yeah, only numeric values. Only numeric values. Okay. And its result will be Boolean. Okay. बात समझ में नहीं आ रही. Let's try to understand with the example. Suppose I have int x equal to 15. Boolean b equal to
Yeah, what will be the output? What will be the output? True. True or false? False. False. How many saying true? How many what? Okay, now tell me. Now tell me. True. It's true now. It's true. Anyone who is saying false? Hmm? Should be, is it false? I don't know. That is 6, then it's true. It's true. Yes. Okay. It's error. In Java, it's error. It's not a mathematics. Let's see. Let's try to, Yes. let's try to understand. Suppose I will execute this line first. This part first. Okay. The value of x is 15. 10 is less than 15. Yes or no? Yes. Yes means true. True. Let's say true. So the statement convert into like this. This part executes and gives true. Now true less than 20. Apple is smaller than orange. Yes? Yes. You cannot say that. We cannot say that. Apple is apple, orange is orange. दो अलग लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब मेरे पापा अपने बच्चों को बिल गेट्स के बच्चों से कंपेयर करेंगे तो कैसे किस काम चलेगा? ठीक है? नहीं समझ में आ रही बात? But here they're comparing with this thing, same x. X is a variable which is stored the numeric values. So numeric value can be compared, na? Yeah. Don't treat treat x as a 15. Okay. So we can compare same values, numeric values, but we cannot compare numeric and Boolean values. Because I already told operands are numeric. Means it will only apply on the numeric values. It cannot be applied on a Boolean value because it's not possible. That's why it's error. But what is operands mean? That's why error. What is the resolution? I will tell you later. I mean, the solution is we should write something like that. Boolean b equal to 10 is less than x and x is less than 20. Then it will work. But this is an invalid thing. That's why I am saying numeric values. The operand can be numeric values. Means these operators can only work with numeric values. They cannot work with Boolean values. And what comes under the numeric? 0 to 9 operators. Under numeric we have char, byte, short, int, long, float, double. Means the relational operator only apply on the these many char, byte, short, int, long, float, double. Means we cannot use for Boolean. We cannot use for class, interface, array, enum. Yes. Yeah. So is Boolean means a variable like x, y, z? Yeah, x is a variable. Oh, okay. Which contain the value of 15. So whenever I use x, that means I am going to use 15. If I write this, that means I am writing 15. You can assume that.
Okay. This part is clear or not? Yeah. So, The main part is you should know where we can apply. Only for numeric values. Simple. Khatam. yeah. The another category is equality operator. Who knows programming already, they can argue with me that equality operator also comes with relational operator. Okay, but in Java there is a different thing. First, what comes in the equality operator? Double equal to and not equal to. The single equal to is assignment operator, means whatever it will calculate, whatever it will give the final value, it will assign into the b, it will store into the b. Like I want to store 15 into the x, so x equal to 5. Here single equal to is the assignment, but if I want to check the equality, it's a double equal to. Okay, and why it is different from relational operator? it, it can be applied on any or all. It can be applied with any kind of data type and result will be Boolean. Let's see. Example. Example. Let's say create one variable I and I want to assign 10. I just create a variable I. Instead of x, I create I variable and assign 10. Yes or no? Now I want to check Boolean be equal to, here it's assignment, whether I is equal to 15. Now tell me the output of the B. Means first it will check whether I equal to 15, and you can say I, how I can compare I? I is a variable of type int, means the value contained by is the numeric value. So we can compare numeric to numeric without any problem. So yeah, what will be the answer? No. No means false. Yes. This time B is B containing false. In the very next line, if we write again B equal to false, what will be the answer? True. True, because B already containing false and I'm trying to compare false with false, it will be true. So now answer will be true. So you can see we can able to apply equality operator on the numeric values as well as Boolean values. That's why I said apply on the, let's say I create car C1 equal to new car. Suppose I have a car class. I just suppose I have a car class. C2 equal to new car class. So if I compare boolean variable, let's say b2 equal to c1 double equal to c2, what will be the answer? What will be the answer? New car. Hmm? New car. Sorry, I'm not getting. New car. New car? No. If the variable is type of boolean, it will only contain either true or false. Right? True. Yeah, true. Okay, yes, true. Anyone who are thinking who about the false? अच्छा why true? The ऐसे ही बस दिल चाह रहा था true बोलने
जल्दी बोलिए, मुझे आज खत्म करना है. आई हैव टू फिनिश दिस ऑपरेटर पार्ट. हाँ भाई लंकेश्वर, लंका लगाओ. Yes. Hmm. Yes. It is true or false? What do you think? True. True. अच्छा काय को? Yes. Why? But there is no any. Because both are same class object. Yes, but there no any parameter. Okay. Suppose you have iPhone and I have iPhone. I have an iPhone. Both IMI number is same or different? Difference. Different. Leave the IMI number. Suppose you and me have the exact same houses in the same locality, in the same area, and you created or I created exactly same house as of yours. Everything is the same. There is no millimeter difference. Okay, but their addresses are same or different? Different. Different. Yes. See, So it could be false. it is false. Let's just wait. Just wait. कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? Just wait. You can see these variable s1, s2, s3 or c1, c2, c3, they are reference variable. They store object or address of object. And this is false, right? Address of object. If we have two different objects, whether the object is same, but if we have two different objects, if we have two distinct objects, whether the object have same properties or not, but they are different, na? They are two entity, and their addresses are same or different? Different. Difference. Different. So double equal to compares the address. That's why it will false. Why? Here reference equality. Not same. Getting? And there are two different objects. This is new car, this is another new car. And there is two different car. Whether those cars look like same, everything is same, but their addresses is different or not. That's why. If somebody come C1 equal to C2, means that's mean C1 will point that object which is pointed by C2. Means now both reference variable have containing the same object reference, है ना? If I run, if I again write this command, and this will give what? True, because now they have address of same object. No? How I missed here. There is assignment. I assign the address of C2 into C1, means C1 will also point. C1 will also points the object which is pointed by C2. Now both having same address, but before C1 point this object reference, C2 point this object reference. That's why it is for earlier. But if I assign this kind of thing, that's mean they are pointing the same object, means they are storing the same address. That's why the main thing is, don't worry, I will cover this thing in great part in string class. The main thing is double equal to or not equal to can be applied on numeric, Boolean as well as reference, while relational are limited to the numeric. Clear? Yes, sir. अरे हाँ है ना बोलिए. Yes. Yes, clear. हाँ जी. जी शुक्रिया. जर्रा नवाजिश के लिए शुक्रिया. Boolean logic operator. What comes? And
or and or XOR. The topic XOR. This is Boolean logic operator. Okay, and or XOR. ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन ठीक है करते हैं. देखें यहाँ yeah. The same thing I was the same thing I want to describe is this. Earlier C1 point this object, C2 point this object, but when I assign C2 equal to C1, that's mean now C1 will point the same object which is pointed by C2. Yes, this is the pictorial representation of that part. This is the pictorial representation of this part. Clear or not? Tell me. Yes, clear. Earlier C1 point this object, C2 point this object. Both are different objects. That's why C1 and C2, the values contained by C1 and C2 are different. But when I set C1 equal to C2 means whatever the object pointed by C2, C1 will also point that, and C1 will also store the address of that object only. So now first object don't have reference, means no one can reach through first object. ये खो गया, कुंभ के मेले में खो गया. Okay, and this object have two ways to reach it, from either from C1 or C2. There are two references. Okay. डिलीट नहीं करना होता भाई. और क्या मैं चाह रहा था भूलिए. ट्रुथ टेबल है. या ट्रुथ टेबल. एक मिनट. Still you can see truth table. If we have x and y true, and operator, so true and true, 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 false, 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 true, false, 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 means if both operands are true then only true, otherwise false in the case of and. Clear? If both operands are true then true, otherwise false in case of and. Means अगर एक भी false हुआ तो result क्या आएगा? False. False. I got it too, that is why. But in case of or, अगर दोनों false हुए तभी false आएगा. अगर एक भी true हुआ तो आंसर क्या आएगा? True. True. This is or. और कर रहे हैं तो कर ही देते हैं. नहीं, कंट्रोल Z. जस्ट 1 मिनट है ना. जस्ट yeah. And what I'm going to do,
Yes, and XOR. I'm going to create XOR. Okay. Okay. Yeah, let's say XOR. Uh, R equal to X Y थोड़ा सा बड़ा कर दूं ठीक है और XOR ठीक है means the simple thing is if both are same then it will false. If both are same then it will be false. Okay, so here we can see false 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 true true false. If they are different then it will be true. This is the truth table of the XOR. But to be honest, I never use this thing in a production grade application or where I mostly use this thing. Okay, so we will focus on that part only. um, let's do by example. Boolean logic. Right click, demo 2. Same where we start. Relational operator. Yeah, I want to write this thing and it will give an error. You can see it's an error. Yes or no? It's an error. Yes or no? What is the solution? Solution is this. This one. This. Now you can see. No error. Let's see. Sys out. Right click. Run. Java. Yes. True. Okay. Why? Because next experiment. True. Let's say true. And also x is less than 20. What is the value of x? That is 15. 15 is less than 20. Yes. True. So as we discussed, if true and true, in case of AND, answer will be True. True. answer will be true. That's why true. That's why true. But let's suppose the case. I revert it. Okay. So value the 10 is less than value of x, that is 15. This is a true.
is x is greater than 20, that is 15 is greater than 20, that is false. So what will be the output? True and false. False. True False. and false, false. Answer will be false. You can see answer will be false. Let me write down. Yes or no? Yes. Yeah, this is something like that. Okay. Don't worry. But in another case, Sorry? but in another case, X or Y, in that case, it could be true, right? There should be X or Y. Yeah, if I change the operator, I change the operator or operator, definitely then I will see this thing in the odd table. True and false, it's a true. Okay. So I will say it's true. Yes? yes. This is one part. It can only apply on operand must be Boolean expression. Boolean expression means the value of the expression should be Boolean. Let's say this is Boolean expression. It will always return Boolean value. It never gives integer value. It never gives string value. It only gives Boolean value. Yes. And result should be Boolean. Yeah. You can see here. The expressions are Boolean and the result, final result is Boolean. Yes or no? Yes. Yes. We have one more interesting thing is C part. The final result is true, right? Is true is Boolean. Sorry. The final result is true, right? In that case, In this particular case, it's true. and true is Boolean. And true is a Boolean value. You can see. In the name of Boolean, we have only two values. True or false. Okay, okay. जब भी मुस्लिम फैमिली में कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करने जाता है और जो काजी साहब होते हैं वो लड़के से पूछते हैं कि भाई आपका निकाह फला की लड़की के साथ किया जा रहा है, आपने कबूल किया, तो लड़के के पास बूलियन डेटा टाइप होता है. हाँ, हाँ हाँ या ना? अगर वो कहेगा सोच के बताएंगे तो जूते चलेंगे फिर. वो ये तो यही कहेगा कि भाई यस, या तो कहेगा नहीं भाई मुझे नहीं कबूल है. हालांकि जब वो तैयार होके नहा धो के बेचारा आया तो यस ही है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, है ना? क्या पता जबरदस्ती लाया गया हो, शादी ना करना चाह रहा हो. सेम फॉर द गर्ल. पहले लड़की से पूछा जाएगा, उसके बाद लड़के से पूछा जाएगा. तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय हाँ ना के, है ना? सोच के बताएंगे, ऐसा नहीं. Boolean values only have two values, true or false. आगे बढ़े. yes, yes. मतलब बहुत सारा है पढ़ाने को. अगर मैं खाली पढ़ाऊं तो 2 महीना कोर्स जावा पढ़ा दूं, लेकिन मेरे को अपने आप को रोकना पड़ता है. एक्सटेंडेड असाइनमेंट like A and B. Let's say हम लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, just for example. So we can do something like that, A and equal to B, just like here. Yeah. Same thing. If I want to write something like that, we can also write something like that. If I want to write XOR, I can also write that. It's just one thing I want to share with you. Now, this is the important thing. बड़े बड़े धुरंधर जिनको लगता है, जिनको जावा आती है, आपको लगता है ना किसी को खानदान में कोई भाई है, बहन है, बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं, जावा के मास्टर है, उनसे क्वेश्चन पूछेगा धराशायी हो जाएंगे. कुछ चीजें होती हैं जो लोग उड़ते हैं उनको नीचे लाने के लिए होती हैं. वही है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर.
आपके वहाँ कोई भी नहीं है तो आप पहली बनिएगा। मेरे पूरे खानदान में, पापा के खानदान में, मम्मी खानदान में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। हालांकि मुझे देखेंगे तो मुझे देख के नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं चप्पल पहन के जाता हूँ मॉल, मेरी बीवी कहती है तुम कपड़े नहीं पहनते हो, शर्ट हमेशा बाहर रहती है, इन नहीं होती है। हाँ, बाल में कभी कंघी की तो की, नहीं की तो नहीं की। हाँ, तो ऐसे अच्छी बात है वो एक्चुअली। इतना टैलेंट लोग मेरे को ऐसा ही लगता है, ऐसे ही होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे सारे दोस्त हैं वो बिल्कुल लौंडा बन के रहते हैं 16 साल के। हालांकि सब 36 साल के हो रहे हैं। तो मतलब The goal is to be rich, not to look rich. बोलते हैं ना वो कि क्या बोलते हैं ना, हाँ, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग है, ऐसा भी नहीं है ना, सिंपल लिविंग है ना हायर थिंकिंग है। मतलब एक नॉर्मल आदमी की तरह, बस मुझे शौक नहीं है इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत नेक आदमी हूँ, बहुत नहीं, मैं बिल्कुल आप सबके जैसा हूँ बिल्कुल। बस थोड़ा सा ये होता है ना कि इंसान अपने आप को मेंटेन करता है, मैं नहीं करता हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरे को आपकी तरह बनना है। अरे नहीं, आप ज्यादा मुझसे अच्छी बनिए, मेरी तरह क्यों नहीं। तो जस्ट मिनट, okay. लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि इसको दूसरे एग्जांपल से करते हैं, कंट्रोल से कंट्रोल। सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों एंड से मुझे मोहब्बत, इसलिए एंड कर लेता हूँ। और ठीक है, और व्हाट विल बी द आंसर, चलिए आप बताइए, फॉर दिस व्हाट विल बी द आंसर। is greater than 20. False. False, definitely false, but let me change the thing. Yeah, 10 is greater than x, that is 15. No. No means false, जावा में बोलेंगे false, ठीक है। और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू। जैसा कि डिस्कस किया है, एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मैं चला के दिखाता हूं आपको, फॉल्स। कुछ लोग आते हैं नेतागिरी में डबल एंड लिख देते हैं और आंसर अभी भी क्या आएगा, फॉल्स। माय गॉड, मींस वेदर वी यूज सिंगल एंड और डबल एंड कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ा नहीं एक्चुअली, ये नहीं कहेंगे फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क पड़ा नहीं है, इस डजंट इम्पैक्ट माय प्रोग्राम, है ना। तो सवाल दिमाग में ये पैदा होता है, दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं कि फिर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड और डबल एंड, है ना। तो कितने लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, हाउ मेनी लर्न और स्टडी मैथमेटिक्स, पढ़ी है। पढ़ी है, All. ठीक है। हाँ मतलब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कितने लोगों को आती है, मैंने कहा कितने लोगों ने पढ़ी है। हाँ पढ़ी है, पढ़ी तो तो है। मैंने भी बहुत पढ़ा, मैं सबसे पहले मैथ्स पढ़ाता था, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था जब मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं आया था, और इतना अच्छा पढ़ाता था कि मतलब लोग कहते थे हम ही से पढ़ेंगे। हालांकि अब मुझे मतलब 1% चीजें भी नहीं याद रह गई, कैलकुलस था और अलजेब्रा था, ये सब बिल्कुल रटा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी पूछ लीजिए, सोते में जगह के पूछ लीजिए बता देते थे, अब नहीं बता पाएंगे, भूल गया, सब भूल गया, ठीक है। ओके। बट स्टिल आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, मुझे बताएं tan इनवर्स मल्टीप्लाई log of divided by tan इनवर्स का t छोटा कर दो यार, डिवाइडेड बाय, ठीक। कोई रिजल्ट बता सकता है इसका, कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स है वो। हम्म वो तो जीरो है ना।
मैंने तो पहले कहा था आसान आसान क्वेश्चन। मैंने कब कहा था कठिन क्वेश्चन? हाँ 0 है। 0 है पक्का? हाँ दुनिया में पक्का। ऐसा कोई स्मार्ट आदमी है जिसने पहले इसको कैलकुलेट किया हो फिर आंसर बताया हो? नो। सारे बेवकूफ लोग हैं। उन्होंने 0 को देखा, उन्होंने 0 को देखा कि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, तो वो जानते हैं कि इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए बड़ा से बड़ा, हाँ तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 होगा। हाँ, ये हमें एक सबक भी एरर हाँ होगा। एरर होगा नहीं, इट्स 0 इन मैथमेटिक्स, इट्स 0 if something is multiplied by 0, something में कुछ भी आ गया, और you can say if anything is multiplied by 0 it's become 0। ये हमारे लिए एक लेसन है, इट्स अ लेसन। दुनिया गोल है तो 0 समथिंग लाइक दुनिया। अगर हम कोई काम दुनिया के लिए करेंगे कि मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मुझे अच्छा कहने लगे, तो गॉड की नजर में ये सब क्या है? 0। 0 है। तो अगर हम किसी की मदद करें, किसी की खैर खाई करें, किसी की फिक्र करें, किसी से मोहब्बत करें, किसी की इज्जत करें, तो इसलिए ना करें, दुनिया के लिए ना करें, दिखावे के लिए ना करें, शो ऑफ के लिए ना करें, है ना? इट्स अ दिल से लेसन। करें। हाँ, दिल से करें, ऊपर वाले को खुश करने के लिए, जिसको मानते हैं, जो भी ऑलमाइटी है आपका, जो भी आपके आराध्य हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके लिए करें कि देखिए भगवान, मैं आपके लिए, मैंने इस गरीब को खाना खिलाया, मैंने आपके लिए खिलाया, इसलिए नहीं खिलाया कि लोग मुझे कहें फोटो सेल्फी खींच ली। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। हाँ फॉलो, तो जब जब आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देंगे ना, तो सब 0 माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए वन वन वन, एक अल्लाह के लिए करेंगे, एक ईश्वर के लिए करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा। दुनिया के लिए करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं वरना सत्संग शुरू हो जाएगा यहाँ। तो वी कैन सी हियर मीन्स वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट। कोई जरूरत नहीं इसको कैलकुलेट करने की, बिकॉज वी नो द आउटपुट। इफ समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट विल बिकम 0। यस और नो? यस। Yes. So in case of AND, in case of single AND, we know that this is false, and answer will be फॉल्स। false, but still it will calculate. Okay, but अगर मैं इसको ऐसे लिखता, छोड़िए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, if I try to write something like that, and here I will use double AND. If it is C, okay, the first output is false, so it will not evaluate it, and answer will be फॉल्स। this is the difference between these two. So which one is performance friendly? सेकंड वन। Yeah, I will always use second one. Clear? क्लियर। इससे अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, हाँ ये था इसका जुगाड़। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। बस थोड़ा सा हम बेस तैयार कर लें, उसके बाद वी विल ट्राई टू मेक सम प्रोग्राम। ओके, आई विल गिव सम असाइनमेंट्स, वी विल डू, ओके, डोंट वरी। बट अगर कुछ मिस हो रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू कवर फ्रॉम द वीडियोज और व्हाटएवर द योर चॉइस। आई डोंट हैव माइंड कि आपको वीडियोज ही देखने हैं, वीडियोज देखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर बड़ा खतरनाक नाम है। लेट्स से int a equal to 10, int b equal to 20. Okay, if I write a plus b, what will be the answer? 30. 30. Very simple, 30. Next, string s1 equal to I love,
string s2 equal to Java. If I write something s1 plus s2, or in a better way, string s3 equal to s1 plus s2, and I will print s3. What will be the output? I love Java. I love Java. I love Java. मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भरोसा करवाते हैं. Java all caps में होगा ना? हाँ, जैसा लिखा वैसे ही होगा, मुझसे मिस्टेक हो सकती है लिखने में. Concatenation जो भी स्पेलिंग होती है. जैसा आपने यहाँ पे दिया वैसे. पहले तो इस बात से तसल्ली कर लीजिए कि आउटपुट सही आ रहा है, या आउटपुट इज फाइन. ओके, जिसका मतलब जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ. Here I am adding two numbers using plus operator. I am adding two numbers using plus operator. This is called adding. But here I am not adding two strings. I am concatenating. Here concatenation जो भी स्पेलिंग होती है. और here क्या हो रहा है? Let's say equal to a plus का b. यहाँ पर c प्रिंट करा गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? Addition. So when plus operator used with string, it's called Concatenation operator. concatenation operator. Clear? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक चीज थी? हाँ जी, समझ में आ गया. शर्माइए नहीं, आप ही का क्लास है. देखिए, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई. ये चीज है, इसको पढ़ाई लिखाई में और अपनी जॉब में रखिए, बाकी कहीं ना अप्लाई करिए. हाँ हाँ, आज बता रहे हैं. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछा करिए, ये ना सोचा करिए कि अरे यार लोग क्या कहेंगे. लोगों का काम है कहना, है ना. आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, कंसर्न, बिल्कुल अपना हक समझ के, इट्स योर राइट, यू विल आस्क, यू कैन आस्क, यू शुड आस्क. ओके, ठीक है, ये तो समझ में आ गया. sys out the 9 kg. What will be the answer? A string s4 equal to, if we have some string and some number, means दो नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर आएगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग आएगा. एक स्ट्रिंग और एक नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वो नंबर को ABC. जी. तो ये प्लस ऑपरेटर इतना खतरनाक है, ये प्लस ऑपरेटर इतना खतरनाक है. ये उन लड़कों की तरह है जो पहले आपको सिगरेट फ्री में पिलाएगा. जब आपकी आदत लग जाएगी तो वो कहेगा खरीद के पिलाओ. कहने मतलब ये कि अगर प्लस के एक तरफ इधर लेफ्ट और राइट स्ट्रिंग ऑपरेटर हुआ तो ये दूसरे को भी स्ट्रिंग ऑपरेटर बनाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और तो दोनों को क्या कर देगा? कॉन्केटेनेट कर देगा. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पहले इसको भी आदत लगाकर सिगरेटिया बना देगा. अब ये दोनों सिगरेट पीने वाले हो गए तो कॉन्केटेनेट हो जाएंगे. ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, इट्स ओके. ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अरे यार, वेरिएबल इंक्रीमेंट अच्छे से पढ़ाना चाह रहा था मैं, जल्दी इसको पढ़ाते हैं. वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर.
ये दो तरह के होते हैं, ये प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये दो फ्लेवर में होते हैं, प्री और पोस्ट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। बात समझ में नहीं आ रही है, समझते हैं। एग्जाम्पल 1, let's say I have int I equal to 10. I have one variable, the value of variable is 10. एक साहब थे, उन्होंने किया प्लस प्लस आई और उसको प्रिंट कर दिया। What will be the output? 11. Okay, just wait. 11. अच्छा, एक दूसरे साहब थे, उन्होंने भी सेम हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे गलती क्या हो गई कि उन्होंने ऐसे कर दिया। जस्ट 1 more minute, मैं इसका नाम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इट्स काइंड ऑफ प्री इंक्रीमेंट। ओके, वाई प्री? बिकॉज प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है। इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर? 11। अच्छा, फिर इंसान कहेगा कि भैया तो फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहले देख लेते हैं कि 11 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेक। तो प्री इंक्रीमेंट में 10 है नहीं? No, it's 11. लोकेश्वर सही है, आंसर 11 ही आएगा। ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेट्स सी, अभी इसको कमेंट कर देते हैं। So here we have increment, answer will be 11. Yes or no? Yes. Let's comment it out and uncomment the post increment. Now again I am going to run. Answer will be Same. 11. In both cases answer is 11. But what is the significance of the pre increment or post increment? तो अगेन एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, हिंदी में दे दूं? It's okay. एक फैमिली थी, उसका बच्चा पैदा होता है, एक बेटी या एक बेटा जो भी है, तो लेट सपोज बेटा ले लीजिए। तो उस बेटे को हमेशा ये लगेगा कि मम्मी मुझे ज्यादा चाहती है और पापा बहन को। बहन है ही नहीं अभी तो एक ही भाई, एक ही बेबी है ना फैमिली में। तो कभी उसको ये एहसास होगा, he ever feels कि पापा मुझे कम चाहते हैं, मम्मी उसको ज्यादा चाहती है? वो है ही नहीं ना, कोई दूसरा है ही नहीं। इट्स ओनली वन पर्सन। पापा भी उसी को चाह रहे हैं, मम्मी भी उसी को चाह रही है, दादा दादी नाना नानी खाला खालू चाचा चाची सब उसी को चाह रहे हैं, कोई है ही नहीं दूसरा मार्केट में। आपका भाई और आपका बहन वो आपका पहला कॉम्पिटिटर होता है दुनिया में, पहला दुश्मन कह लीजिए, पहला कॉम्पिटिटर के लिए होता है दुनिया में। वो अलग बात है कि माँ बाप इतनी अच्छी परवरिश करते हैं और अल्लाह दिल में मोहब्बत डालते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, वरना वो आपका पहला जो है कॉम्पिटिटर है दुनिया में। फिर छोटा भाई आ गया, छोटी बहन आ गई, फिर ये आपको एहसास होगा कि यार पापा तो मुझे चाहते हैं लेकिन मम्मी जो है छोटू को ज्यादा चाहती है। दादी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं लेकिन दादा जो है वो छोटू को ज्यादा चाहते हैं। तो मामला कब गड़बड़ाएगा? जब एक से दूसरा ज्यादा होंगे। इसीलिए बच्चे होने चाहिए 3, कभी 2 नहीं होने चाहिए। नहीं मैं सर बता रहा हूँ आपको, 2 होंगे तो आपस में हमेशा कंपटीशन रहेगा,
लड़ाई झगड़ा रहेगा। 3 रहेगा तो कभी तीसरा वाला पहले की पार्टी में रहेगा, कभी दूसरे की पार्टी में रहेगा, तो मामला चलता रहेगा। बहुत सही बात किया आपने। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बात कभी कभी सही कर देते हैं। ठीक है, Was we have only one, right? हैं? और एक ही है तो फिर वो तो आप लोगों को नचाएगा बाद में कि आप तो हम ही है ना, कोई है ही नहीं आपका। एक तो और खतरनाक है, जिसके नहीं हो सुकून से। नहीं, बहुत बड़ी नेमत है औलाद, बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, सत्संग नहीं करना है, आगे चलना है। तो जब एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मम्मी भी उसी को ज्यादा चाह रही है, पापा भी उसी को ज्यादा चाह रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब 2 होते हैं। तो आइए 2 लाते हैं मार्केट में। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, int j equal to, and I am going to print I and j both. Now tell me the output. Value of I, value of j. जल्दी से बताइए, टाइम हो गया जाना। वैल्यू मुझे ऑफ तो पता नहीं। आई तो 10 ही है। I तो 10 ही है, ठीक। j बताइए भाई। 11। j 11 हो गया। वाह भाई वाह। नहीं भाई देखिए, रूल ऑफ द थंब, फराडे, माइकल फैराडे का रूल है ये ऐसी, ये टोटल फर्जी बात है, झूठ बात है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ये माइकल फैराडे का रूल है कि अगर किसी पे प्लस प्लस ऑपरेटर लग गया तो उसकी वैल्यू तो बढ़ के रहेगी। अच्छा, तो ओके आई तो बेचारा 11 हो ही जाएगा। ओके। ठीक, अब मसला जो है वो जे का है। प्रॉब्लम इज विद जे। It's यहाँ पर 11. इनको दो काम करने हैं। पहले आपको एक ही काम करना था, आपको सिर्फ खाना खाना था, और आपको सिर्फ खाना खाना था। तो आप किसी से कहेंगे पहले मैं खाना खा लेता हूँ फिर मैं खाना खाऊंगा, नहीं नहीं, आपको एक ही काम करना है, तो पहले बाद में क्या। लेकिन आपको सोना भी है और आपको खाना खाना भी है। तो आप कहेंगे फर्स्ट आई विल ईट देन आई विल स्लीप, और कोई और कहेगा कि नहीं, फर्स्ट आई विल स्लीप देन आई विल ईट, है ना। तो यहाँ पे 2 काम है, 2 ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो प्री कहता है कि भैया जी, क्या कहता है, भैया जी। आवाज आती है पीछे, आप लोग सुन नहीं पाते हैं। प्री कहता है भैया जी, आई एम द प्री, तो फर्स्ट आई विल इंक्रीमेंट माई वैल्यू। ओके, हो जाओ भैया हो जाओ, तुम पहले कितने थे 10, अब कितने हो गए 11, नाउ आई एम 11, आई एम हैप्पी। देन आई विल असाइन माई अपडेटेड वैल्यू टू जे। आंसर कितना आएगा 11 11। राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन, बोथ आर 11। पर अगर हाँ प्लीज प्लीज आस्क आस्क। मेरा एक डाउट है, वो 11 ही क्यों आया, 12 क्यों नहीं आया? एक बार बढ़ाएंगे तो एक ही तो बढ़ेगा। अच्छा, और 2 प्लस प्लस है ना फिर वहां पे। नहीं, 2 प्लस प्लस का मतलब हुआ कि वैल्यू 1 बढ़ेगी। अच्छा, ओके। प्लस प्लस का मतलब ये होगा कि एक वैल्यू बढ़ा दो, वट एवर द वैल्यू। अगर मान लीजिए आपके पास $100 है, मैंने आपको प्लस प्लस कर दिया, तो आपके पास कितने डॉलर हो जाएंगे 101 दो $101 बार हो जाएंगे। ट्राई कर। हैं? अच्छा। ओके ओके। अगर याला ऑपरेटर किसी को मिल जाए तो दिन भर अपने प्लस प्लस लगाया करेगा बैठ के। क्या कर रहे हो, प्लस प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक ठीक है, ठीक है, आगे आगे बढ़े। जी। इट्स अ पोस्ट, नाउ इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट। अगेन इट हैव टू वर्क। एक तो इसको अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 1, और अपनी वैल्यू को असाइन करना है जे में। 2 काम करने हैं। पहले कौन सा काम करेगा, ये कह रहा है कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट हूं, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट हूं। पहले दुनिया के सारे काम कर लो, जब थक जाना तो इंक्रीमेंट कर देना। तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी थी 10 ये जे में क्या डालेगा 10, और बाद में अपने आप को इंक्रीमेंट करके क्या कर लेगा 11 तो माइकल फराडे का रूल है, ये माइकल फराडे कोई है नहीं, ऐसे ही कह रहा हूं, फर्जी कह रहा हूं, कि जिसपे प्लस प्लस कॉल हो गया उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। ठीक, दूसरे वाला डिपेंड करता है कि भैया ये प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। ना बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आई, वो चुपचाप बैठे हैं सन्नाटे में, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ओके। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्क तब नजर आएगा जब आपके पास मल्टीपल टास्क हो एक बार में, वरना एक ही काम करना है।
आपको सिर्फ सोना है, तो आप किसी से पूछेंगे पहले कि मैं सो लूँ कि पहले मैं बाद में सो लूँ? ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है। So I'm done for the day. I will complete this part tomorrow, इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो ठीक है, ओके। Inshallah. Bye. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Bye. Thank you.